Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So, in the last class, we made marking scheme for this question, and I asked you guys that you should try this question and you should try to write this answer. And today, I would be paragraphing the whole answer for you, right? So, let's start this 20 marker question. Okay, let's read the question once again. Explain explain what is meant by market failure. Consider how government intervention can reduce market failure. Okay. So we made the marking scheme in the last class. What marking scheme did we made? So in the last class, we made the marking scheme. And first, let's have a quick recap. First, we will define what is market failure. Then we will define what is social cost, what is social benefit. Then we will define MSC and MSB, the difference between MSC and MSB. Then we will define socially optimum level, its diagram and its explanation. Then we will define three causes of market failure: public good, merit good, demerit good, with two diagrams, one for merit good and the other for demerit good. Then we will go towards policies, which the government will use to deal with the issue of market failure, which includes indirect tax for demerit goods and advertisement. And for merit goods, we have subsidy and again advertisement. And then we will go towards the conclusion part, in which we will mention only disadvantages of policies of market failure, and then we will give a conclusion line. Okay. So let's start with this answer. It would be appreciated if you guys write it down with me. Okay. So, sir, first we will start with the definition of market failure. So, if you guys remember, I told you guys that market failure occurs due to over allocation and under allocation of resources, which will result in welfare loss to the society, right? So, I will start with market failure occurs. Market failure occurs. Market failure occurs when freely functioning market fails to allocate resources. Market failure occurs when freely functioning market fails to allocate resources according to society's point of view. Market failure occurs when freely functioning market fails to allocate resources according to society's point of view. That is over and under allocation of resources. That is over and under allocation of resources, resulting in resulting in welfare loss, resulting in welfare loss to the society. Okay. Now we will define what is social cost and social benefit. Okay. Social cost. Social cost is the total cost to the society. Social cost is the total cost to the society, comma, it includes private and external cost, comma, it includes private and external cost. Private cost, private cost is cost borne by consumer in form of price of a good, and for producer, and for producer in terms of कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सर सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट है. सोशल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कंज्यूमर बेयर करेगा इन फॉर्म ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड, और प्रोड्यूसर बेयर करेगा इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक्सटर्नल कॉस्ट
External cost is cost to third party. External cost is cost borne by third party. External cost is cost borne by third party for which no compensation, for which no compensation is paid. Okay, so we are done with social cost. What is social cost? Now we will go with what is social benefit. ओके, सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी की कॉस्ट है, तो सोशल बेनिफिट भी पूरी सोसाइटी का होगा. सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट is the benefit to the whole society, comma it includes private and external benefit, comma it includes private and external benefit, right? Sir, what is private benefit? Private benefit is received by consumer and producer. Private benefit is received by consumer and producer. For consumer, in terms of satisfaction, is received by consumer in terms of satisfaction, and for producer, and for producer in terms of, and for producer in terms of revenue, right? सर एक्सटर्नल बेनिफिट कौन रिसीव करेगा? एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी रिसीव करेगी ना, तो लिख दूंगा इधर एक्सटर्नल बेनिफिट इज बेनिफिट रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी. एक्सटर्नल बेनिफिट इज बेनिफिट रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर विच नो अप्रोप्रिएट अमाउंट इज चार्ज, मतलब मुफ्त में बेनिफिट मिल जाएगा, फ्री में. विच फॉर विच नो अप्रोप्रिएट amount is charged. Okay. Now we will define what is MSB and MSC. Sir, what was MSC? MSC is additional cost borne of by producing every additional unit, and marginal social benefit is additional benefit received by producing every additional unit. तो अब क्या लिखूंगा? MSC और MSB में क्या डिफरेंस है, तो बताएं जरा. मार्जिनल सोशल कॉस्ट, marginal social cost is the additional cost of producing every additional unit, and marginal social benefit, and marginal social benefit is additional benefit, and marginal social benefit is additional benefit of producing, of producing of producing every additional unit. Right now we will define what is socially optimum level of output, right? So now we will change paragraph. Okay. Socially optimum level, socially optimum level of output, socially optimum level of output is a point where marginal social cost, सोशली ऑप्टिमम क्या होता है भाई? सोशली ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा, तो लिखूं इधर सोशली ऑप्टिमम लेवल इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट,
is equal to marginal social benefit, that is MSC is equal to MSB, where there is no welfare loss, where there is no welfare loss to the society. ओके, सही है। वेयर देयर इज नो वेलफेयर लॉस टू द सोसाइटी। सोशली ऑप्टिमम लेवल वो पॉइंट है जहां पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा, वहां पर सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होगा। इफ वी आर प्रोड्यूसिंग if we are producing more than the optimum level at quantity Q1, at quantity Q1, so there will be over allocation of resources. So there will be over allocation of resources. In case of demerit goods, as marginal social cost, as marginal social cost exceeds marginal social benefit, as marginal social cost exceeds marginal social benefit due to existence of external cost, that is area A till B, that is area A till B, resulting in welfare loss, that is area EAB, that is area EAB, which will be minimized at point E. पॉइंट डी का मतलब है मिनिमाइज होगा किधर, जब आप वापसी किधर आ जाओगे, सोशली ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है, सही है। um, however if we are producing, if we are producing, if we are producing less than the socially optimum level, however if we are producing less than the socially optimum level at quantity Q2, at quantity Q2, so there will be under allocation of resources, so there will be under allocation of resources, so there will be under allocation of resources in case of merit goods, as marginal social benefit, exceeds मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इस बार जो आउटपुट है ना, वो बेनिफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉस्ट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि
एक्सटर्नल बेनिफिट की एग्जिस्टेंस है, ड्यू टू, इसलिए बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट दैट इज एरिया सी टिल डी। ठीक है, मुझे तो याद है। अब आपकी मर्जी, आप पहले डायग्राम बनाओ, पहले पैराग्राफ लिखो या उसके बाद डायग्राम बनाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है, इट्स टोटली योर चॉइस। ओके। रिजल्टिंग इन वेलफेयर लॉस, रिजल्टिंग इन वेलफेयर लॉस दैट इज, दैट इज एरिया सी डी ई, which will be maximized, which will be maximized at point E as shown in diagram number 1। ठीक है, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ। Now we will make the diagram. So I don't have space over there, so I'm gonna make it in the on the next page. Okay. So first we will make two axes। सबसे पहले दो एक्सेस बनाएंगे। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी। दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इज MSB, this upward sloping line is MSC, this is your socially optimum level। Okay, so let's label, this is your MSB, this is your MSC, this is your equilibrium, this is your quantity, right? If we are producing at quantity Q, if we are producing at quantity Q1, so this means there is over allocation of resources, right? क्वांटिटी Q1 पे बेटा ओवर एलोकेशन हो रही है। ये जो एडिशनल आउटपुट है आप देख सकते हैं, ये कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और बेनिफिट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये जो ट्राइंगल बेटा आपके सामने है, ये वेलफेयर लॉस है, इतना सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। नाउ लेट्स सपोज इफ वी आर ऑपरेटिंग एट क्वांटिटी Q2, नाउ लेट्स सपोज इफ वी आर ऑपरेटिंग एट क्वांटिटी Q2, अगर हम क्वांटिटी Q2 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, सो एट क्वांटिटी Q2 देर इज अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, additional output is contributing more in terms of benefit than in terms of loss. So this triangle is your welfare loss. So in order to minimize the external cost, we should operate at equilibrium E, and in order to maximize external benefit, we should operate at equilibrium E। So ये आपकी first diagram है, and I hope आपको clear होगा कि हमने explanation में क्या लिखा है। So if this is clear, let me know so I can proceed towards now the causes of market failure। Okay, so now moving towards the causes part। तो देर आर मेनी कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर की बहुत सारी कॉजेज हैं, जिसमें आ जाता है पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, मोनोपली। अब सारा तो नहीं लिख सकते ना, तो जो मेन मेन है वो लिखेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है मेरिट गुड के केस में, डीमेरिट गुड में केस में, और एक वो लिख लेते हैं, मोनोपली लिख लो या पब्लिक गुड लिख लो। अगर मोनोपली लिख रहे हो तो मोनोपली को सॉल्व करने का तरीका है कि गवर्नमेंट उसकी फिर प्राइवेटाइजेशन कर दे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड। आए पब्लिक गुड से शुरू करते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है और टैक्स के थ्रू चार्ज करता है, राइट? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स which are provided by the government, public goods are those goods which are provided by the government and are charged through taxes, and are charged through taxes।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स। ओके, पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और टैक्स के थ्रू चार्ज करती है। एंड पब्लिक गुड्स हैज सम फीचर्स, पब्लिक गुड हैज थ्री फीचर्स। बेटा पब्लिक गुड में कितने फीचर्स हैं? पब्लिक गुड में तीन फीचर्स हैं, कौन कौन से? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिजेक्टेबल ना, तो लिखूं। एंड इट हैज सम फीचर्स, नॉन राइवल, कॉमा, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल। बेटा पब्लिक गुड में तीन फीचर्स हैं, कौन कौन से? नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिजेक्टेबल। तो जरा याद दिलाना। नॉन राइवल कहता है कि अगर एक बंदा कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे की कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नॉन एक्सक्लूडेबल कहता है अगर एक बंदा कंज्यूम करेगा तो इससे दूसरा बंदा एक्सक्लूड नहीं होगा। नॉन रिजेक्टेबल कहता है चाहे आप पे करें नहीं करें, आप इस गुड को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। नॉन राइवल, नॉन राइवल इज व्हेन कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल, non-rival is when consumption by one individual will not exclude, will not reduce, sorry. Non-rival is when consumption by one individual will not reduce consumption for other individuals. Non-excludable, non-excludable is when consumption by one individual, non-excludable is when consumption by one individual will not exceed, will not exclude, will not exclude other individual, other individual from consuming it, right? नॉन रिजेक्टेबल क्या है? चाहे आप पे करो नहीं करो, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। नॉन रिजेक्टेबल इज दैट इवन इफ यू पे फॉर दिस गुड और यू डू नॉट, यू कैन नॉट रिजेक्ट देम। ओके। अच्छा, पब्लिक गुड मार्केट फेलियर का रीजन क्यों है? क्योंकि पब्लिक गुड में एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम। ओके। पब्लिक गुड, पब्लिक गुड इज एसोसिएटेड, पब्लिक गुड इज एसोसिएटेड विद फ्री राइडर प्रॉब्लम, public good is associated with free rider problem, that is consumers know why should we pay for a good, why should we pay for a good when we can enjoy benefits for free, why should we pay for a good when we can enjoy benefits for free. So private sector, so private sector, so private sector will never provide these goods, so private sector will never provide these goods as there is no way to charge for them,
as there is no way to earn profit. So entire responsibility is on government, comma, they provide these goods, comma, they provide these goods and charge through taxes. They provide these goods and charge through taxes. Okay. Okay. Now, what is demerit good and merit good? Okay. Demerit goods डीमेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, राइट? क्या लिखूं इधर? डीमेरिट गुड्स, demerit goods are those goods, demerit goods are those goods which are harmful for the society. Demerit goods are those goods which are harmful for the society as they create external costs. Example, drugs and alcohol. Due to lack of information, due to lack of information, these goods are overproduced, undercharged. एक तो ओवर प्रोड्यूस है, सप्लाई ज्यादा है, दूसरा सस्ता भी है, और तीसरा ओवर कंज्यूम भी है, एंड ओवर कंज्यूम एज कंज्यूमर्स and producers only consider private costs and private benefits, only consider private cost and private benefits, comma, operating at point even, comma, operating at point even, comma, resulting in welfare loss, that is area A E even. Okay, as shown in diagram number 2, as shown in diagram number 2. ठीक है, अब आप मेरिट गुड्स का बताओगे। मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। इधर लिख दूं ना, मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स, merit goods are those goods which are beneficial for the society. Merit goods are those goods which are beneficial for the society. Merit goods are those goods which are beneficial for the society as they create external benefit. Example, healthcare, and education. Due to lack of information,
Due to lack of information, these goods are under consumed these goods are under consumed and under produced. क्यों क्यों अंडर कंज्यूमर अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं ये गुड्स? एज प्राइवेट कॉस्ट and benefits are only considered, comma, operating at point even as shown in diagram number 3. Okay, now we will make two diagrams, one for demerit good and the other for merit good. So please 2 minute इधर देखिएगा. Last thing for today. We will continue this tomorrow, inshallah. Okay, now we will make two axes. First, we will do labeling. This is your price and this is your quantity, right? This downward sloping line is MSB. This upward sloping line is MSC. This is your socially optimum level. This is your price and quantity, okay? So this is MSB. This is MSC. This is your socially optimum level. This is your price and this is your quantity. In case of demerit goods, they are overproduced and there is no external benefit. So आपका MSB और MSB equal होगा. This line is known as MPC. So a point where MPC and MPB is equal is known as new equilibrium. So a point where MPC and MPB is equal. So a point where MPC and MPB is equal is known as individual optimum level, from where we will get new price and new quantity, right? Okay, so this is your new quantity. Okay, so this is your new price P1 and this is your new quantity Q1. Okay, so you can see this good is being overproduced, undercharged and overconsumed. Now the vertical distance between MSC and MPC is क्या होगा बेटा इन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है? The vertical distance between MSC and MPC is external cost. Okay, ये पूरी डायग्राम हमने 2 समझा दी. This is diagram number 2. Okay, diagram number 2 clear to everyone? Now this is MSB. This downward sloping line is MSB. This is MSC. This is your equilibrium. This is your equilibrium. जहां पर MSB और MSC इक्वल होगा वो होगा जहां पर MSB और MSC इक्वल होगा वो होगा सोशली ऑप्टिमम लेवल. ठीक है, तो जहां ये MSC और MPC इक्वल है, MSC और MPC इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं होती. ऐसा ही है. ये हो गई आपकी प्राइस, ये हो गई आपकी क्वांटिटी. अब बताओ मेरिट गुड अंडर कंज्यूम्ड है ना, इसकी डिमांड कम है, तो ये मैंने इन्वर्ट शिफ्ट करा और इस लाइन को मैंने लिख दिया MPB. तो अब बताएं मुझे जहां पर MPC और MPB इक्वल होगा वो होगा इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल. तो ये हो गया बेटा आपका इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल और यहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई क्वांटिटी. ठीक है, तो ये आ गई न्यू प्राइस P से P1 और ये आ गई न्यू क्वांटिटी Q से Q1. ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ भाई? और ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम E से E1. अब मुझे बताएं जरा इन दोनों के दरमियान जो MSB और MPB के दरमियान डिफरेंस होगा, जो MSB और MPB के दरमियान डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्सटर्नल बेनिफिट. और ये जो ट्राइंगल है ये आपका होगा वेलफेयर लॉस. ये ट्राइंगल आपका क्या होगा? ये ट्राइंगल आपका वेलफेयर लॉस होगा. सो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट आंसर टुमारो. So that's it for today. Thank you so much. I'm going to share this in a while. If you have taken the screenshot, it's good. Thank you.